Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Yasir Mahmood. I hope you all will be fine and enjoying good health. Dear student, today we are going to start unit number 7, which is of the pressure. Now, what is the pressure? Pressure is a force acting per unit area is called pressure. Mean when we act a force on the given area, then the pressure will be produced. It can be written as P will be equal to F over A, where F is a force and A is the area. It means that pressure depends on the force and the area. And it's clear from the equation that there is an inverse relation between the pressure and the area. Mean if we increase the surface area, the exerted pressure will be the smaller. And if we decrease the surface area, then the exerted pressure will be the larger one. Now, if you want to further elaborate how the area and the force relate with the pressure, let's take a simple example. If you want to cut a fruit with a knife, and if you hold the flat part of the knife against the fruit, it wouldn't cut the surface because the force is spread out of the large surface area. And as the surface area is larger, therefore it will exert a low pressure. On the other hand, if you turn the blade so the cutting edge is pressed into the fruit, the same force is applied over a much smaller surface area. At that time, as the surface area is much smaller, therefore pressure will vastly increased, so the surface cut easily. That's how we can explain pressure in terms of the force and the area. Now the SI unit of the pressure is that is Newton per meter square, as the SI unit of the force is Newton and the SI unit of the area is meter square, Newton per meter square. That can also be written as Pascal because the concept of the pressure is given by the Pascal. Now the pressure is a scalar quantity. Okay, my dear student. Next is atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? The pressure exerted by the air molecule at the sea level is called atmospheric pressure. मीन जो एयर मॉलिक्यूल सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, जो हमारा जो सी लेवल है उसके अलोंग जो प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और उसकी वैल्यू जो सी होती है 1.013 10 इसके पावर 5 पास्कल होती है, और इसको हम वन एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. तो वी कैन राइट एज वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0135 10 इसके पावर 5 पास्कल. There is another unit of the pressure is a torr, and the 1 atmosphere is equal to 760 torr. And we can describe another unit as mercury, Hg, that 1 atmosphere is equal to 760 millimeter of the mercury, Hg. Now, the pressure in our body is also about the same pressure as the 1 atmosphere. That's why we do not feel the high atmospheric pressure exerted on us, because our body in normal circumstances pressure is also 1 atmosphere. Now we can describe the variation of the pressure with the altitude and with the depth. तो स्टूडेंट अगर हम जितना डेप्थ पे जाते रहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहेगा. अगर हम डेप्थ पे जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जितना डेप्थ पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बढ़ता रहेगा, लेकिन ह्यूमन हमारा जो बॉडी का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा. इससे क्या डिसएडवांटेज होगा कि हमें अपने लंग्स को एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम होगी, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है. इसी वजह से जितना आप डेप्थ पे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता रहता है और हमें सांस लेने में मुश्किल होती है. और जितना हम हाइट पे जाते जाते हैं प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता रहता है. ठीक है बेटा. डिक्रीज क्यों होता रहता है? क्योंकि हमारे पास जो है एयर के थिन होने की वजह से, और जो थिनर एयर है इससे क्या डिसएडवांटेज होता है, इससे हमें जो है हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है और हमें जो है सांस लेने में मुश्किल होती है. इसी वजह से अगर हम जो है बिलो द सी लेवल चले जाएं, जब भी हमें जो है प्रॉब्लम होती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है. अबव सी लेवल चले जाए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास वो डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहता है. लेकिन अगर साथ एटमॉस्फेयर का प्रेशर वेरी करेगा तो जाहिर बात है दोनों हमें दोनों मौके पर डेथ पे चले जाएं, जब भी हमें सांस लेने में मुश्किल होगी तो डेथ पे चले जाएंगे तो हमारे जो है लंग्स एक्सपैंड करने में मुश्किल होगी, जिससे सांस लेने में मसला होता है. अगर हम हाइट पे चले जाएंगे तो एयर के थिन होने की वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल होंगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है. दैट्स हाउ वी कैन डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर with the depth and with the altitude. Now we can take the simple example, take a simple experiment.
how we can describe the atmospheric pressure. Let's suppose we have taken a two suction pump. This one. There are two suction pumps that are being held together, and if the two pumps are pressed inward to dry out the air, this action creates a partial vacuum between the two suction pumps, and you will find it extremely difficult to pull the two pumps apart. Why? Because there is a large pressure created between the two suction pumps. That's very difficult to that's very difficult to pull the two pumps apart. That's how the effect of the pressure can be observed in our daily life. Okay, my dear student, that's it for today's lecture. See you next time. Okay, Allah Hafiz.